News at 5, in association with Accoland Amusement Park, Annapurna Foods, Juniorholics, and Biz Farm Biscuits. Floods, landslides throw normal life out of gear in region's biggest city, Guwahati. At least 5 people dead in nature's fury. NDRF, SDRF pressed into service. Met Department warns of more rains in Guwahati in next 3 days. District administration urges people in vulnerable areas to move to safer locations. Trinamool campaign steps up campaign for Tripura by polls. Well, party National General Secretary Abhishek Banerjee arrives in state, predicts BJP downfall in 2023. Centre announces historic Agnipath scheme for recruitment in armed forces. Transformative initiative to provide youthful profile to forces. And amid outrage from Buddhist communities, Sikkim government bans release of Nepali film Kabaddi 4 in state. Hello and welcome to News at 5. I'm Priyadarshini Medhi and now on to updates from a flooded region. Well, incessant rains threw out of gear in region's largest city, Guwahati. Heavy rain since last night has caused flash floods besides triggering landslides in parts of the city. At least 5 people have lost their lives in the landslides and flash floods in city. 4 laborers of a construction site in Boragaon lost their lives following a landslide, while a woman died due to flash floods in the Anil Nagar area of the city. So the gateway to the northeast, Guwahati, is home to nearly 2 million people, has been adversely affected by flash floods and landslides following incessant rainfall. Such is the situation that the district administration had to seek help from the SDRF and NDRF to reach out to affected people, some of whom were marooned due to flooding in the localities. Well, taking note of the situation, the Kamrup Metropolitan District Administration also issued an advisory to citizens asking them not to venture out unless absolutely essential. Well, the administration has also advised that occupants of residences which are prone to water logging and landslides must shift to a safer locations or contact the district administration. Meanwhile, the Kamrup District Administration has launched the following helpline numbers. Well, these are 1077 86381 12297. Well, those in distress can also contact Circle Officer Dispur in the following number 83760 29984. I repeat, 83760 29984. And earlier in the morning, tragedy struck in Boragaon area of Guwahati, where 4 laborers lost their lives when the structure they were taking shelter in due to a landslide. The deceased have been identified as Manwar Hussain, Matiur Haq, Hussainu Ali, and Amrul Haq. ৰাতি আমি গম পাইছিলো কি লেন্ডস্লাইড হৈছে বৰাগাঁও জায়গাটোত আৰু গম পাই আমি ৰাতি আহি পেলে এইখিনি আমি দেখিলো কি ৱাল ভাঙি পিছফালে পাহাৰ আছিলে আৰু আমি গম পোৱা তাত 4জন লেবাৰ মানে ওচৰৰ বাসিন্দা আমি গম পাইছো শুই আছিলে ৰাতি হয়তো তেওঁলোকে গম নাপালে হঠাতে এই ঘটনাটো ঘটিল ৱাল ভাঙি মাটিকে পাহাৰখিনি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে 4জন বুলি আমি এতিয়ালৈ গম পাইছো আমি কাম কৰি আছো আৰু জানাত 3জন ধুবুৰীৰ হ'ব লাগে তেওঁলোকে ইয়াতে কনষ্ট্ৰাকচন কাম কৰিছে ফ্লেটৰ কাম চলি আছিলে
আৰু তেওঁৰ লেবাৰ হিচাপে ইয়াতে ভাড়া কৰি আছিলে। গোটেই ৰাতি আমি কাম কৰি আছো। Meanwhile, a woman lost her life due to floods in Anil Nagar area of Guwahati. Well, Northeast Live editor-in-chief Wasbir Hussain spoke to Kamrup Metropolitan Deputy Commissioner Pallav Gopal Jha earlier in the day on the prevailing flood situation and measures taken to restore things. DC Jha said that while 4 to 5 landslides have been reported from the city, major waterlogging was also witnessed in many areas. The district administration has urged people not to venture out unless it's essential. I'm now joined by Mr. Pallav Jha, the Deputy Commissioner of Kamrup Metro. Mr. Jha, can you describe the situation in Guwahati? What is the death toll of landslides? And most of the roads are understood to be underwater, as we have been seeing the whole morning. Because of incessant rains, we are facing problems of vulnerability towards urban flooding and the landslide and all. So we had a very unfortunate incident last night around 2:30, and we have lost some lives also, but the bodies have been recovered. 4 or 5 major landslides have happened around the city, and we have been addressing to that. Apart from that, there is major water logging in the city, and that's why we have requested people not to move out of their house unless it's absolutely essential. And we have also opened our helpline numbers for people who feel that they are in vulnerable locations. We are requesting them to move to the safe locations. At the same time, we have opened our helplines of circle officers' phone numbers and the toll-free helpline of DDMA. Right. So that we can create relief camps if need be. Right. And what is the casualty out of these landslides? Total casualty? Total people dead? 4 people died in the morning. It was an unfortunate incident. A house fell down, and it came on a construction site. So there were 4 laborers there, and we lost all their lives. So, but we are in touch with the family, with the police, and hopefully some kind of ex gratia payment we will be able to do at the earliest. Right. Have you taken the help of the SDRF and other rescue agencies? Absolutely. SDRF, NDRF, both are helping us since morning. There are many routes where, because of landslide, trees have fallen. Power lines have got snapped. So APDCL is on the field. Revenue officials are on the field. SDRF, police, everyone is on the field. We are monitoring very carefully, and as the situation moves on, we will respond more proactively. And relief camps have already been readied and kept in mind in case people need to shift there. Absolutely. Mr. Pallav Jha, the Deputy Commissioner of Kamrup Metro, thank you very much for speaking to Northeast Live. Thank you. Meanwhile, our Chief of Bureau Arundam Das caught up with Guwahati Mayor Mrigen Horonia to get an update on the steps taken to restore normalcy. Listen in. Mayor of Guwahati, Mr. Mrigen Horonia. Well, the people of Guwahati are passing through one of the troubled times right now. So, how is the situation? ये बात है आप लोग का जो यहाँ का गुवाहाटी का जो बारिश का टाइम है वो बारिश का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है 133 mm का है। इस तरह बारिश गुवाहाटी में बहुत कमती दिखाता है, लेकिन इस बार बहुत रात से बारिश हो रहा है। बारिश का कारण ये पानी ज़्यादा हो रहा है। हम लोग का जो पानी जाने का रास्ता आउटलेट है वो बहुत क्लियर है, पानी जा रहा है, लेकिन ज़्यादा पानी होने से ये थोड़ा वक्त लगेगा। शॉर्ट टाइम में हम लोग ये निकल जाएंगे। तो अभी तक क्या खबर आ रही है, कितने कैजुअलिटी और इंजरी हुए लैंडस्लाइड और फ्लड में? लैंडस्लाइड में थोड़ा 4-5 का ये खबर आ रहा है। हम और ऑफिशियल से बात करके कि क्या कोशिश कर सकते हैं हम करेंगे। मेट डिपार्टमेंट में और भी 2 दिन तक बारिश होने की आशंका जताई है, तो क्या एफर्ट है अभी आपके तरफ से, आप लोगों की तरफ से ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए? हम लोग का जितना एफर्ट है वो तो हम लगा चुका है, लेकिन और जल्दी से पानी निकालने से हम जेसीबी जो है और जो क्लियर है, जो लोग वाटर लॉगिंग जहाँ हुआ वो हम लोग क्लियर करके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पानी निकालने का हम लोग कोशिश करेंगे। पाम वगैरह जो है उसका से आगे और करने से हम लोग कोशिश करेंगे। और रेस्क्यू में हम लोग का जो डीसी का ऑफिस है वो
वो कह रहा कैम वगैरह हो रहा है, पीने का पानी भी दे रहा है, वो खाने का सामान भी दे रहा है, वो सब करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डीसी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया कि अनलेस एंड अनटिल कोई जरूरी काम ना हो घर से ना घर से निकले। निकले वो बात है, ज़्यादा से बारिश होने के कारण हम पब्लिक को अलर्ट कर लेंगे, और पहाड़ में जो वासी है वो लोग भी थोड़ा सावधान से रहना चाहिए। और हम लोग का अपील है जो वो लोग नीचे आके रहे, किस कारण कोई समय में कुछ भी हो सकता है, आप लोग अलर्ट रहिए। और जो हम लोग का बांध पानी का है, अगर वो सब देख के आज हम रात में बैठ के क्या करते हैं हम लोग देखें। Thank you very much. That was the mayor of Guwahati, Mr. Mrigan Solania, talking exclusively to Northeast Live. Reporting from Diffu, this is Arindam Das for Northeast Live. Meanwhile, the flood situation drew sharp reactions from people and commuters. Majority of the areas in Guwahati were flooded, throwing normal life out of gear and causing innumerable inconvenience to people. আমি এনে হেল্প কৰিছোঁ, মানে ৰুমতো পানী ইমান ৰুমতো থাকিবা জাগা নাই, এইটোৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহি কিনে অলপ টাইম পাছ কৰিলোঁ আৰু সহায় কৰিছোঁ। আমি একো বিনিময় লোৱা নাই, এনে কিবা যদি চাহ তাহ খুৱাই যায় কিছুমানে। গুৱাহাটীত যিটো সমস্যা এটা সদায় থাকিব এনেকৈ লাগি আছে, যিমানে মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ইয়াৰ এই প্ৰব্লেমটো সদায় থাকে, কি আৰু কৰিবি। এতিয়া বৰষুণৰ দ্বাৰা মানুহ কেনেকৈ কষ্ট পাই আছে, আগতো পাইছোঁ, কিন্তু এইটো সমস্যা কেতিয়া সমাধান নকৰে, কি কৰিম আৰু। কোনফালে যাব এতিয়া উপায়টো নাই, তো তাৰ কাৰণে ধৰক পাৰ কৰিব লগা হ'ল। তেখেতসকলেও বহুত সহায় কৰিছে, বন্ধু বান্ধৱীবিলাক যিখিনি আছে। আধালৈকে আহিছিলোঁ, আধাৰ পৰাতো নোৱাৰিলোঁ, মানে গাড়ীখনেই ডুবি যায়, ইমানেই পানী। ভয় লাগিছে, কিন্তু এতিয়া ডিউটিটো পাব লাগিব ন, ডিউটিটো অন টাইম পাব লাগিব, টাইমৰ আগত নাপালেতো অসুবিধা হয়। চব ফালেদি গৈছোঁ, সেইপিনেদিও আপোনাৰ আহিব নোৱাৰি। ৰাজগড়ত বা ভাঙাগড়ত সোমাব লাগিলে এভৰি এণ্ট্ৰি মানে ক্ল'জ। কোনফালেদি আপুনি সোমাব, যোনফালে যায় আপোনাৰ ধৰক বাইকখন ডুবি যাব, মানুহটো সেই ওপৰেদি পানী গৈ আছে, এনেকুৱা টাইপতো ডুবি যায়। বহুত বেছি গৈছে। কিমান লৈছে আজি মোৰ কমচে কম 200 টকা গ'ল, দুবাৰ ৰিক্সা লৈ আহিলোঁ। ভাড়া কিমান? 200 টকা তেওঁক কম, আকৌ মই দুবাৰ ৰিক্সা চেঞ্জ কৰিলোঁ। মানে আগত য'ত মই 40-50 টকাত আহোঁ, কাৰণে আমি গাড়ী চলাবই পৰা নাই, একদম পুৰা চাৰিওপিনে পানী বানপানী। আৰু ইয়াতে ষ্টেচনতো বেয়া অৱস্থা, বেয়া অৱস্থা, ষ্টেচনৰ অৱস্থা বেয়া একদম। हम तेजपुर से आए हैं जी। हालत बहुत खराब है। बहुत खराब है, बारिश के चक्कर में, बारिश में बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कोई जाने नहीं सकता है, पूरा एकदम चारों तरफ पानी पानी है। यहाँ पर बहुत ही सुधार की जरूरत है, और बारिश में बहुत ही समस्या होती है, और रेलवे स्टेशन का मैनेजमेंट और गवर्नमेंट दोनों इस समस्या की सुध ले, समय से पानी का निकाल हो जावे, और यहाँ पर कम से कम गंदगी हो, उसके बारे में बहुत ही काम करने की जरूरत है। নিজৰ ঘৰতে ভাড়া, বহুত কেইজন লোক ভাড়া আছে, কেনেকৈ চলিব, কি কৰিব তেওঁলোকে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মই টেলিফোনিক বাৰ্তা হৈছে, তেওঁলোকে বেলেগলৈ গৈছে, ক'ৰবাত হোটেলত তেওঁলোকে গৈছে। কাৰণ চাওক তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা আহে গুৱাহাটীত থাকিবৰ কাৰণে, গুৱাহাটীত তেওঁলোকে পঢ়িবৰ কাৰণে আহে বা বিভিন্ন কামত আহে। যদি গুৱাহাটীত এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছত যদি এনেকুৱা হয়, কি ক'ম। এজন ব্যক্তি ইয়াতে যোৱাকালি ৰাতি আহিছিল, ৰাতি আহোঁতে ইয়াতে কিবা এটা তেওঁ হৈ আছিল, পুতুককৈ তেওঁ মৰিলে, ৰাতি তেওঁ ঢুকালে। তাৰ বিনিময়ত মই নিজে মৃগেন খৰিয়া ডাঙৰীয়াক ফোন কৰিছোঁ যে SDRF NDRF টিম আনক। 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত এটা মৃগেন খৰিয়া ডাঙৰীয়া এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিল, কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ ছেকেণ্ডবাৰৰ বাবে তেওঁ মেয়ৰ হৈছিল, এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিল এই ফিল্ডত। কিন্তু তেওঁ এই চেলেঞ্জটো ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে। তেওঁ 4-5 বাৰ ফোনৰ পিছত তেওঁ ফোনটো উঠোৱাৰ পিছত তেওঁ SDRF NDRF 4-5 ঘণ্টাৰ পিছত পঠাইছে। তাৰপিছত দেৱাজীত শৰ্মা আহি এই উদ্ধাৰ কৰি লৈ গৈছে। ঘৰলৈকে যাম, ইয়াতে গুৱাহাটীৰ গংগাত থাকি কেনে লাভ নাই, এতিয়া গাঁৱতে যাম। গাঁৱৰ পথাৰৰ পানীত তাতে জিকিব পাৰি, কিন্তু এই নলা নৰ্দমাৰ গুৰ পানীত ইয়াতে নোৱাৰি। ইয়াৰে মেইন দায়ী বুলি ভাবোঁ মই আমাৰ GMCৰ দুজন অভিযন্তা, এজন হ'ল SDO শৰ্মা আৰু এজন হ'ল এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ এলিনা বেগম। তেওঁলোকক আজি মই উন্নয়ন সমিতিৰ ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁলোকক আজি 3 মাহ আগৰ পৰা কৈ আছিলোঁ আমাৰ। Well, incessant rains and flash floods since last night has obstructed normal life here in Guwahati. Well, schools have been forced to cancel their classes. Offices are being hit because employees are finding it very difficult to get to work. Well, landslides have been reported in several locations and, of course, several casualties as well. I am standing right outside Rajgarh Road, one of the localities here in Guwahati. As you can see, water level rising as we speak. The rain has stopped, but water level rising as we speak. Behind me, you can see this vast stretch. People must be there trapped inside. Right now, we just have rickshaws. But if you go ahead from where I stand, the SDRF team has already been deployed to take stock of the situation. Now, the administration has put out advisory for people not to step out of their houses until and unless it is necessary. Well, it took me
so much time to get to work today because of the same reason. Hence, we urge everybody to stay back home until and unless it's really important for you to come out. Meanwhile, there may be no respite for the residents of Guwahati, at least for the next 3 days, as far as inclement weather is concerned. The Met Department has predicted very heavy to heavy rainfall across Guwahati till June 17. Well, this comes as a warning signal at a time when major parts of the city are already reeling under flood waters. Well, not only this, landslides have taken a huge toll in the lives of Guwahati residents. For instance, take a look at these visuals from Kanchan Nagar in Noonmati area, where a 30-meter long guard wall was broken in the landslide, adding to the woes of the people. Fortunately, the people residing in the area could somehow come to safety. এই ৱালখন খহি গৈছে আমাৰ মূল পথ যেটো আমাৰ শ্মশানৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠা সংযোগী যেটো মূল পথ ৰাস্তা এটো খহি যোৱা মানে আমাৰ গোটেই অঞ্চলবাসীৰ কাৰণে বৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি ক্ষতিকাৰক হৈ পৰিছে ক্ষতি ঠিক তেনেকে হোৱা নাই এটি কুৱা আছে কুৱাটো সম্পূৰ্ণভাৱে পোত খাই গৈছে আৰু এটি ঘৰ এটা বনাইছে কিন্তু ঘৰটোলৈকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ৱালখন গৈ কিনে এটো পিডব্লিউডি আন্ডাৰত হৈছিলে সাইন্টিফিক্যালি তো কৰা হোৱা বুলি তেখেতসকলে কৈছিল কিন্তু এতিয়া সাইন্টিফিক্যালি যদি কৰিছেই তেতিয়াহলে ৱালখনটো ভাঙিব নালাগিছিলে Likewise, similar is the scene in Khargoli area where landslides have damaged a guard wall. Meanwhile, landslides have also been reported in the Nilachal Hills, which brought vehicular movement to a standstill for a few hours. And parts of North Guwahati also witnessed landslides triggered by heavy rains. হয় ৰাতি ধাৰাসাৰা বৰষুণত মাটি খহি লেবাৰ এজন যেনে তেনে বাচিছে আৰু ঘৰ দুৱাৰ সব ভাগিছে কিমান মানুহ আছে 20 জন মান আছে 20 জন কোন মানুহ এইবিলাক বাহিৰ দেশৰ মানুহ জায়গা কাম কৰা কালি ৰাতি বৰষুণ দিতে গোটেই মাটি চানি খহি গ'লে আমি ইয়াতে মানে কেইটামান মানুহ থাকে ইয়াতে লেবাৰ গোটেই মাটি খতে অথন বাচিছে আৰু বিছনাত আমি শুই আছিলে লেবাৰ কেইটামান And it is not just humans, but animals too are facing a hard time owing to the rains. And as you can see on your screens at this moment, viewers, at least 3 wild elephants were washed away in the strong waves of the Dudnoy River when the herd of jumbos were coming downhill. Fortunately, the elephants could finally manage to come back to safety. So viewers, it is not just humans but animals too are facing a hard time owing to the rains and so incessant rains threw life out of gear in Guwahati. And heavy rain since the last night caused flash floods besides triggering landslides in parts of Guwahati. And as already mentioned, at least 5 people have lost their lives in the landslides and flash floods in city. 4 laborers of a construction site in Boragaon lost their lives following a landslide, while a woman died due to flash floods in the Anil Nagar area of the city. So the gateway to the northeast, Guwahati, which is home to nearly 2 million people, has been adversely affected by flash floods and landslides following incessant rainfall. And as such is the situation that the district administration had to seek help from the SDRF and NDRF to reach out to affected people, some of whom were marooned due to flooding in the localities. And taking note of the situation, the Kamrup Metropolitan District Administration also issued an advisory to citizens asking them not to venture out unless absolutely essential.
So, viewers, the administration has also advised the occupants of residences which are prone to waterlogging and landslides must shift to a safer locations or contact the district administration. Meanwhile, the Kamrup District Administration has launched the following helpline numbers. Well, these are 1077 86381 12297. I repeat, 1077 86381 12297. And meanwhile, those in distress can also contact Circle Officer Dispur in the following number: 83760 29984. And earlier in the morning, tragedy struck in Boragaon area of Guwahati. All right, and now I'm being joined live with my colleague Ajit Jaiswal. All right, Ajit Jaiswal will give us updates on the flood situation in Guwahati. We'll be joining with Ajit Jaiswal in some time now. But earlier in the morning, tragedy struck in Boragaon area of Guwahati, where 4 laborers lost their lives when the structure they were taking shelter in due to a landslide. And after just few moments, I'll be joined live with my colleague Ajit Jaiswal to give us update on the present situation of flood in Guwahati. So rains lead to flooding in most parts of Guwahati, and as you can see on your screens, 5 people have already lost their lives. All right, now I'm being joined live with my colleague Ajit Jaiswal. So Ajit, फिलहाल आप कहाँ पे हो और सिचुएशन कैसा है, फ्लड सिचुएशन कैसा है वहाँ पे उस एरिया में? जी पूजा, मैं इस समय मौजूद हूँ गुवाहाटी के जो राजगढ़ इलाके में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी का स्तर है वो कमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम यहाँ पर दोपहर को भी पहुँचे थे और यहाँ पर जो जल स्तर है वो बिल्कुल ही लगातार बराबर है। और एक बार फिर देखा जा रहा है कि जो मौसम जो दोपहर को जो थोड़ी बहुत साफ हो गई थी, अभी शाम होते होते फिर से बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। और कहना पड़ेगा कि अगर फिर से यहाँ पर बारिश होता है तो इस इलाके के जितने भी लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। और जो जल स्तर है वो सुबह से ही यहाँ पर जो जल स्तर है वो एक जैसी बनी हुई है। और लोग यहाँ से, जो इलाके के जितने भी लोग हैं वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से भी जैसा कि कहा गया है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने को कहा गया है, उसी तरह इस इलाके के भी जो लोग हैं वो अपने अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों के लिए निकल रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कुछ लोग जो हैं वो पैदल हो या रिक्शा के सहारे वो इस इलाके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बारिश फिर से आती है, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, अगले 3 दिनों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है, अगर बारिश फिर से आती है तो इस इलाके के लोगों का जीना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। प्रिया जी हाँ अजीत, हम वहाँ पे काफी लोगों को देख रहे हैं, क्या कोई रिएक्शन ले सकते हैं आप इस वक्त? जी प्रिया, हम जरूर रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई सारे लोग हैं और আপনার পৰা জানিব বিচাৰিছো পানী কেতিয়াৰ পৰা আছে? পানীটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছে। কমিছে নেকি পানী? পানী অকণমান হ'লেও কমিছে, অকণমান নহয় কমিছে, কিন্তু ঘটনা হ'ল আমাৰ মানুহবিলাক সচেতন হ'ব লাগিব। নালাৰ কাম কৰে ঠিকে, কিন্তু নালাত মানুহে কি জাবৰ জোঁথৰ পেলায়, সেইকাৰণে আমাৰ মানুহ সচেতন হ'ব নহ'লে এনেকুৱা আমাৰ দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিব। আৰু এটা কথা, যদি আৰু বৰষুণ আহে তেতিয়া পানী বেছি হ'ব অট'মেটিক।
কাৰণ বৰষুণতে কোনো ৰুকিব নোৱাৰে না। আপুনি কি ক'ব, পানী কমিছে নেকি? পানীটো অকণমান কমিছে, কিন্তু কমা বুলি ক'ব নোৱাৰি একেবাৰে। কিন্তু বতৰ দেখিছে ডাৱৰীয়া, ৰাতিলৈ হয়তো বৰষুণ আহিব পাৰে। গতিকে মই জনসাধাৰণক অলপ সাৱধানে থাকিবৰ কাৰণে কৈছোঁ, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে থাকিবৰ কাৰণে কৈছোঁ। এতিয়া খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে মোৰ নিজৰে, তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে দেখিছে আপোনালোকে, গতিকে আমাৰ ৰাইজৰো কিছু কিছু ভুল আছে। প্ৰশাসনেওতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা SDRF NDRF বাহিনী আহিছে, সৰলুৰ পৰা পানী নিষ্কাশনৰ কাম আৰম্ভ হৈছেই অলৰেডি। তো সেয়াই ক'ম আৰু। গতিকে বতৰ খুবেই বেয়া, গতিকে সকলোৱে সাৱধানে থাকিব, সেয়াই আশা কৰিছোঁ। কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে? সন্মুখীনটো এতিয়া কি ক'ম আৰু, আপোনাৰ নলা নৰ্দমাবোৰ উফন্দি উঠিছে গোটেই, ঘৰত পানী সোমাইছে বহুতৰ। তো বিশেষকৈ অনিল নগৰ, নবীন নগৰ আৰু বিশেষকৈ ৰাজগড় 2014 পৰা 2022 এই মোটামুটি 6-7 বছৰৰ ভিতৰত এতিয়া ইমানখিনি বানপানী হোৱা মানে দেখিছোঁ আৰু এই বছৰত। তো ইয়াৰ আগত 2014 লাষ্ট দেখিছিলোঁ এনেকুৱা। তো বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব, গতিকে সকলোকে সাৱধানে থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। সেইখিনিয়ে আৰু। जी हाँ अजीत, जैसे कि बोला है, हाँ प्लीज कंटिन्यू अजीत। इलाके में जो करीब 6-7 साल बाद जी 6-7 साल बाद लोगों ने यहाँ पर इस तरीके का जल जमाव देखा है। पहले भी यहाँ पर जल जमाव की समस्या होती रहती थी, लेकिन उसके बाद जो स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार हुई थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में गुवाहाटी में जिस तरीके से बारिश हुई है, उससे इस इलाके में स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। प्रिया जी हाँ अजीत, जैसे कि आपने बताया कि कल रात से लगातार बारिश हो रही है गुवाहाटी पे, और SDRF एंड NDRF भी सुबह से लगातार काम करे, तो उसके बारे में भी बताइए अजीत। SDRF और NDRF का ऑपरेशन कैसे चल रहा है? यहाँ पर जो इस इलाके में SDRF और NDRF इस इलाके में जो SDRF और NDRF का अभियान लगातार जारी है। जो लोग हैं, जो महिला है, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनको यहाँ से सुरक्षित स्थानों में निकाला जा रहा है और राहत एवं बचाव का कार्य जारी है। SDRF की टीम यहाँ पर कई नाव के साथ यहाँ पर हम सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति है वो बेहद ही चिंतनीय है। जी हाँ अजीत, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज डिटेल्स। All right, viewers, so incessant rains to you live out of gear in region's largest city, and on your screens, my colleague Ajit Jaiswal was right there in the Rajgarh area, and the flood water is still there, but the NDRF and SDRF, they are continuing with their operation, and the water logging is still there, and the Met Department has also cautioned that there will be heavy to very heavy rainfall in the next 3 days in Guwahati. So it's time for a very short break. Stay tuned. I'll be right back with more news and updates. Stay with us. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Sterling Reserve, come alive. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আসল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট গুড মৰ্নিং খুৰা একাপ আদা দিয়া সা এই আমাজনী মোদীজী মোৰ পৰিয়াল বাৰু খুৰা আপুনি দেৱালত কিয় লিখিছে মোদীজী মোৰ পৰিয়াল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক চিনি পায় নেকি চিনি তো নাপায় কিন্তু আমাৰ দুখ তেওঁ সহ্য কৰিব নোৱাৰে মানে নবুজিলা ঘৰে ঘৰে বিনামূলীয়া ৰাচন যোগান ধৰে বেজি দিয়ালে
আৰু মাজনী সংকটত যোনে তোমাক লগ দিয়ে তেওঁহে প্ৰকৃততে পৰিয়ালৰ বুজিলো খুৰা আপোনাৰ পৰিয়াল বেষ্ট হয় লোৱা চাহ খোৱা মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম Welcome back. You're watching News at 5. And now, before moving on to some other news, let's take a look at the headlines once again. Floods, landslides throw normal life out of gear in region's biggest city, Guwahati. At least 5 people dead in nature's fury, and SDRF pressed into service. Met Department warns of more rains in Guwahati in next 3 days. District Administration urges people in vulnerable areas to move to safer locations. Well, Trinamool steps up campaign for Tripura by polls. Party National General Secretary Abhishek Banerjee arrives in state. Predicts BJP downfall in 2023. Centre announces historic Agnipath scheme for recruitment in armed forces. Transformative initiative to provide youthful profile to forces. And amid outrage from Buddhist communities, Sikkim government bans release of Nepali film Kabaddi 4 in state. And on to Tripura now. Well, hectic politicking is being witnessed in Tripura as the date for the crucial by-polls near. Stepping up the party campaign, Trinamool Congress National General Secretary Abhishek Banerjee drummed up support for TMC candidates for 6 Agartala and Town Badauli seat. Well, launching an attack on the ruling BJP, Banerjee said that the party's days are numbered in the state and that the change in CM was indicative that the Saffron party is on back foot. যত দিন গেছে বিজেপি তত ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে ত্রিপুরার পরিবর্তন হবে এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই আমি তো বলেছিলাম নভেম্বর মাসে যে বিপ্লব বাবু আপনার বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে কি হলো এক মাস আগে টাটা বাই বাই খেলা শেষ নৌকায় তো ভুটো ধরে গেছে এখন নৌকার চালক পাল্টাচ্ছে আরে নৌকা ডুবতে চলেছে চালক পাল্টে কি হবে আপনার কাপড় ছিঁড়ে গেছে আপনি তাপ্পি দিয়ে কদিন চালাবেন আপনি চালাতে পারবেন না এখন বিপ্লব দেবের জায়গায় নতুন বলির পাঠা কাকে করেছে ডক্টর মানিক শাহ মদটা পুরনো বোতলটা নতুন নতুন বোতলে পুরনো মদ এই হচ্ছে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের নিদান তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরার মাটিতে পা রেখেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হয়েছে পরিবর্তন করতে আর 2022-এ মুখ্যমন্ত্রী বদলেছে 2023-এ সরকার পাল্টাবে আপনি লিখে রাখুন 19-এ পাল্টাওনি 20-তে পাল্টাওনি 21-এ পাল্টাওনি হঠাৎ করে 22-এ কি এত জ্বালা হলো কেন তৃণমূল কংগ্রেস পিছনে পড়ে গেছে আর আমরা আমাদের দলটা অন্য দল থমকে চমকে লাভ নেই আর ত্রিপুরাকে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে দিল্লি চালাবে না ত্রিপুরাকে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে ত্রিপুরার মানুষ চালাবে ত্রিপুরার 40 লক্ষ মোবাইল বোনেরা চালাবে All right, moving on to Sikkim. Well, the Sikkim government today announced a temporary ban on the release of the controversial Nepali film Kabaddi 4 amid outrage over slapping monk. Well, the Chief Minister Prem Singh Tabang took to social media to announce the state government's decision to impose a ban on the release of Kabaddi 4 until the dispute is resolved in an acceptable manner. This decision comes just a day after the movie producers Shishma Gurung and Anmol Gurung issued a public apology to the Buddhist communities and monk associations in Sikkim.
Meanwhile, reacting on the ban, the producers of the movie welcomed the decision of the government. It may be mentioned here that lead actress Meruna Mangar had accused monk Purba Lama of touching her inappropriately during the crowd rush at the premiere in Nepal, and in turn slaps the monk, made him hold his ears and perform a sit-up as a punishment. Besides, the actress has not publicly apologized to the monk, which has been a widespread demand of the public. स्थानीय लोक कथा संस्थाओं की भावना को सम्मान करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने 17 जून को रिलीज होने वाली कबड्डी 4 जो नेपाली फिल्म है, अभी बहुत चर्चित नेपाली फिल्म है, उसको रिलीज पर प्रतिबंध लगा है सिक्किम पर। और इस फिल्म की मुख्य नायिका मेरुना मंगर और एक लामा के बीच काठमांडू में कई दिन पहले एक हाथापाई की घटना हुई थी और उस घटना को लेकर सिक्किम के बहुत सारे संगठन तथा लोगों ने इस फिल्म को सिक्किम में रिलीज करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। और इस मांग को मद्देनजर रखते हुए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने 17 जून को रिलीज होने वाली कबड्डी फिल्म की रिलीज पर राज्य में प्रतिबंध लगा है। और मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक स्टेटस के माध्यम से जानकारी दी है और उन्होंने स्टेटस में लिखा है कि जब तक इस जो विवाद है, इस विवाद का समाधान नहीं होगा, तब तक ये फिल्म सिक्किम में रिलीज नहीं होगी। Moving on now. In a historic landmark for India's defense forces, the centre has announced the Agnipath recruitment scheme today. Defense Minister Rajnath Singh, together with the three chiefs of the armed services, addressed a press conference in New Delhi and announced the details of the plan. Under the scheme, soldiers will be recruited for a tenure of 4 years so as to provide youthful profile to the armed forces. The chiefs of three services had briefed Prime Minister Narendra Modi 2 weeks ago about the Agnipath scheme for recruiting soldiers, which will pave the way for inducting soldiers into the security forces for a short term. The scheme is implemented by the Department of Military Affairs. Under the new Agnipath scheme, youths will join the army for a period of 4 years and serve the nation. The scheme is a part of the government's efforts towards reducing the expenditure and age profile of the defense forces. The places for recruitment can also be significantly expanded. At the end of 4 years, about 80% of the soldiers will be relieved of duty and will receive assistance from the armed forces for further employment opportunities. Many corporations will also be interested in reserving jobs for trained and disciplined youth who have served their country. भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी।
It has been estimated by the armed forces that thousands of crores in salary, allowances, and pension can be saved if a large number of soldiers are recruited under this four of duty concept. The Agniveers who will form a part of the Indian Air Force are going to be an inherent component of an organization that prides itself on its core values of mission, integrity, and excellence. These core values equip our men and women with the knowledge, ethos, and pride to render service to the nation and forms the bedrock on which professional attitudes and beliefs that characterize an air warrior are formed. Agniveers, by virtue of the tailored training that will be accorded to them, combined with a robust and resilient unit ethos and work culture, will imbibe these very values. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा, एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा. The Agnipath scheme is a transformational reform for the army and the nation and aims to bring a paradigm change in the human resource management of the Indian Army. The scheme, one of the most significant initiatives, aims to make the Army a future-ready fighting force capable of meeting multiple challenges across the full spectrum of conflict. इस योजना को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया है. This effort complements other ongoing initiatives to transform the Indian Army into a modern, technology-driven, Atmanirbhar and a battle-worthy force. And on to big national focus now. Well, the Enforcement Directorate is interrogating Congress leader Rahul Gandhi for the second day in the National Herald case. Well, this comes after nearly 10 hours of intense grilling by the federal agency yesterday. This indeed is a big development as massive protest had erupted in different parts of the nation opposing Rahul Gandhi being interrogated by the Enforcement Directorate. Meanwhile, Congress leader Randeep Surjewala, briefing news persons, said that the ED probe against Rahul Gandhi is an attempt to muzzle his voice as he has always questioned the center on issues like Chinese intrusion, fuel price hike, unemployment, besides others. The Congress leader also termed ED's Rahul interrogation as an attack on the common people. ये हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार से जवाबदेही मांगते हैं, जो जनता के मुद्दों को भयमुक्त तरीके से निडरता से उठाते हैं. भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए. It may be recalled here that the Enforcement Directorate's grilling of the former Congress president on Monday took place amidst the Satyagraha launched by party workers in protest against the ED summon in the National Herald case. Gandhi arrived at the ED office in the national capital with his sister and Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra amid a huge march by the party workers along with him to the office. Various senior leaders, including Randeep Surjewala, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot took part in the party's Satyagraha march. Now, the incident has sparked a fresh row between the ruling BJP and the opposition Congress, in which the latter have accused the ruling party of being vindictive and misusing the federal agency.
All right, back to region now. The month-long Saga Dawa festival, which is one of the most important festivals celebrated in Sikkim, commenced today. Well, on this occasion, the followers of Mahayana Buddhism commemorate the birth of Lord Buddha and his attainment of enlightenment and salvation. Meanwhile, a procession was carried out which started from the Sukla Khang monastery and passed through the streets of Gangtok. The procession was accompanied by the lighting of butter lamps carrying idols of the Buddha and sacred scriptures being read out across various temples. It may be mentioned here that the festivities mostly happen across Gangtok in the form of processions, prayers, and extending alms to the needy. Well, Sagadawa is one of the most important and prominent Buddhist festival. The significance of this day is, on this day, Lord Buddha is supposed to have taken birth. He attained enlightenment, and it's also the day for parinirvana, that is his death. So all these three events, which is very, very important in Buddhist tradition, is celebrated today. We have, 2 days prayers on 12th and 13th. Today is the main day. So we have finished 2 days prayer. Today we'll be taking out the holy scriptures known as Kangyur and Dengyur. Well, this is out here. We have, we celebrate Lord Buddha's Jayanti in different days, But in Sikkim, we celebrate on this particular date, the 15th day of 4th month of lunar calendar. And back to national focus. Well, in a historic move, Prime Minister Narendra Modi today directed all ministries and government departments to recruit 10 lakh individuals within next 18 months on a mission mode. Well, the decision followed after Prime Minister Modi reviewed the status of human resources across all government departments and ministries. Well, the Prime Minister's review meeting comes more than 2 months after he suggested the secretaries of the central government to take immediate steps to fill up existing vacancies in all the ministries and respective departments. Following this, every department and ministry had prepared a list of vacancies against the sanctioned post. Meanwhile, we have reactions coming in from youths who are elated over Prime Minister Narendra Modi's decisive move to solve the unemployment issue and enhance the governance by filling up the vacancies in all government departments. अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका, और देश की प्रगति होगी। और आप जैसे यंग के लिए कितनी बड़ी खबर है? देखिए, बहुत अच्छी खबर है और हम बहुत खुश हैं मोदी जी से, जो इतना बड़ा रोजगार देंगे 10 लाख लोगों को, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। आज मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किए वो बहुत अच्छी बात है। यूथ को एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड गवर्नमेंट से ये ऐसी एक्शन तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बड़ा वाला स्टेप है एंड इससे बहुत फ़ायदा होगा, इकोनॉमी में भी बहुत फ़ायदा होगा, बढ़ जाएगी, अच्छे से सब हो जाएगा। हाँ, उनके लिए भी बहुत सही हो जाएगा, मतलब एवरीथिंग वुड बी गुड। And we also have reactions coming in from Union Commerce and Industries Minister Piyush Goyal on this big development. Listen in. मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरा निरीक्षण करके ये फैसला लिया है कि 10 लाख हमारे युवा युवती भाई बहनों को नौकरी दी जाएगी सरकार में, सरकार के अन्य विभागों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ये दर्शाता है कि नए भारत के निर्माण में अब युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब युवा शक्ति हमारी सशक्त होती है, जब युवा की क्षमताएं सरकारी कामकाज में आती है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारी नई PLI स्कीम्स में जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, जो निर्यात को तेज गति से बढ़ावा दिया जा रहा है, इस सब में भी सरकारी भूमिका को नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्वरूप में सोचने के लिए हमारे नए जो लोग जुड़ेंगे सरकार में, इनका मैं समझता हूं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा और सरकारी कामकाज जनता के साथ जुड़ने में भी लाभ होगा। ये रही बात कांग्रेस की, शायद उनके ध्यान में नहीं आता है किस प्रकार से तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, निर्यात बढ़ रहा है, नए उत्पादन के स्रोत बढ़ रहे हैं,
नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतनी तेज गति से बढ़ रहा है। ये सब नए काम के अवसर, नई नौकरियां तो स्वाभाविक रूप से लोगों तक पहुंचाता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद नारेबाजी के बदले जिन राज्यों में अभी रह गई है उसमें ही सुशासन दे दे, अच्छी सरकार चला ले, जनता की सेवा कर ले, तो देश और देशवासियों का बड़ा हित हो। On the other hand, we also have reactions coming in from Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami and Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो लगातार देश के नौजवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए लगातार उनका संकल्प है सभी को रोजगार देना। इस क्रम में 10 लाख लोगों को रोजगार का सृजन करना और रोजगार देना निश्चित रूप से देश की तरुणाई के लिए बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ी बात है। देश पे 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी ये नहीं कि जो कहा वो करके दिखाने का काम किया और आज युवाओं का विश्वास जो बढ़ा है, अब मैं तो युवाओं का यही आह्वान करूंगा तैयार। Meanwhile, we also have reactions coming in from Asha Lakra, BJP National Secretary, on historic move by Prime Minister Narendra Modi to recruit 10 lakhs individual within next 18 months. Listen in. देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। उन्होंने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लोकल फॉर वोकल, ऐसा उन्होंने 3 विषय को रखा। आज का युवा जिस तरह से स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं, उन्होंने और एक बात कही कि हम जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। और इस दृष्टिकोण से मोदी जी ने अलग अलग उद्योग जगत को भारत में ला करके लोगों को स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दे करके जॉब देने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगला 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां पक्का जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। And shifting focus now. In a bid to avert any further misunderstanding, Elon Musk will speak to Twitter employees this week. Well, the event was announced by Twitter's chief executive Parag Agarwal in an email to staff on Monday. Mr. Agarwal told employees that they could submit questions to Musk in advance of the meeting. Well, the meeting will be held on Thursday and employees can directly ask questions to Elon Musk. Well, the multi-billionaire Tesla boss is expected to take questions from Twitter's workers at the meeting. The all-hands meeting will be the first time Elon Musk will have spoken directly with the company's workforce since launching his takeover bid. Meanwhile, Elon Musk has warned he may quit the deal if the firm fails to provide data about fake accounts on the platform. Earlier this month, he threatened to walk away from the deal, accusing the social media company of thwarting his request to learn more about its user base. In a letter filed with regulators, Elon Musk said that he was entitled to do his own measurement of spam accounts. Well, in a significant development, the Chinese ambassador to Sri Lanka, Ki Zhenghong, met his U.S. counterpart, Julie Chung, in Colombo and held a discussion on broad topics of mutual interest and pledged support in helping the island nation mitigate its crippling economic crisis. Commenting on the meeting, U.S. Ambassador Chung said the discussion centered on the current political and economic situation in Sri Lanka and asserted that there was an exchange of ideas on trade, investment, and development. Both envoys agreed on the need to jointly come forward in helping Sri Lanka weather through the current economic and political crisis. The meeting assumes significance and comes at a time when Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe said last week that his government could not tap on the $1.5 billion credit line from China and is yet to hear back from Beijing on the $1 billion loans.
Well, Sri Lanka is currently facing its worst economic crisis since independence from Britain in 1948. The economic crisis has prompted an acute shortage of essential items like food, medicine, cooking gas, and other fuel, toilet paper, and even matches, with Sri Lankans being forced to wait in lines lasting hours outside stores to buy fuel and cooking gas. And now on to some sports news. Well, ahead of tonight's match against Hong Kong, Indian men's football team captain Sunil Chhetri said that his team need to focus on the upcoming Asian Cup qualifier clash against the opponent and end the tournament on a positive note. Well, India is playing Hong Kong in their last match of the Group D Asian Cup qualifiers at the VKBK today, while Afghanistan is going up against Cambodia in the other match of the day. Chetri said there is a big prize at the end, which is a qualification to the Asian Cup. Even though India has done good in the last two games, we have not achieved anything yet, said Chetri. The skipper added the team have learned to keep everything aside and just have to focus on the next game and end the tournament on a positive note. Well, Sunil is currently on 83 international goals, made a mention of the young guns in the team who are coming out with flying colours. The veteran said slowly and steadily the likes of Akash, Dixon, Suresh, Anwar will be able to achieve greatness if they get 10-20 caps under their belt. Team India defeated Afghanistan in their previous AFC Asian Cup qualifier match by 2-1 on Saturday. Well, news and updates continue on Northeast Live, so stay tuned for more news. Thanks for watching. Prime, the primetime news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice. Long shot, but I got the reach. Pop lock, now I'm off the leash.